बराबर है क्या वैसा करना? थैंक यू वेरी मच टू ऑल। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। ओम शांति। Yes, this magazine is launched by our beautiful Bollywood diva Minissha Lamba. Thank you so much everyone for being here. Thank you, thank you, thank you. और मैं congratulations कहना चाहूँगी to the entire team. जब उन्होंने concept मुझे explain किया था, I was like, wow. We haven't had something that is done for newcomers. क्योंकि देखिए जब एक्टर आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में तो वो कैसे दिखाएं कि हम एक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आजकल तो बहुत ऑडिशंस लिए जाते हैं, लेकिन पहले ऑडिशंस लिए भी नहीं जा सकते थे। तो जब तक आपको चांस नहीं मिलता, आप प्रूव कैसे करेंगे स्क्रीन पे कि आप लोकप्रिय हो कि नहीं, कि आप हिट बनोगे कि नहीं, कि आगे आपका करियर होगा कि नहीं। तो और जब आप आते हो शायद आपके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है कि आप किससे मिले, फोटोग्राफ्स किसको दें, क्योंकि हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इतने बिजी होते हैं, वो चाहते भी हैं, अगर वो चाहे भी वो हर न्यू कमर से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी होते हैं। सो दिस मैगजीन और ये जो इन्होंने कहा था, ये मैगजीन ये फ्री में बेचने वाले हैं, फ्री में एक्चुअली भेजने वाले हैं, सॉरी नॉट बेचने, फ्री में भेजने वाले हैं पूरी इंडस्ट्री को, प्रोडक्शन हाउसेस को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, कोऑर्डिनेटर्स को, कास्टिंग एजेंट्स को, ताकि लोग इत्मीनान से देख सके, ओके दिस इज द पर्सन, दैट इज द पर्सन, दैट इज द पर्सन। एंड आई विश समवन हैड डन दिस अर्लियर बिकॉज इट इज अ नॉवेल कॉन्सेप्ट। और 4 महीने के लिए ये फ्री के लिए बटेगा फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, और मुझे लगता है ये फ्री में बटना चाहिए फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। और उसके बाद दिस मैगजीन विल बी ऑन सेल ऑन स्टैंड्स फॉर द जनरल पब्लिक। So I think it is very amazing. I wish something like this, a platform like this was available when I was being launched and when I needed people to see me and all of that. So at least now newcomers will have a good exposure
to people from the industry, because that's what's important. That's so true, that's so true. And we are really glad that you are here. And now I would love to call Mr. Ajay Kumar, Honorably Joint Commissioner Income Tax, on the stage, please. एक बार जोरदार ताली। By God, हमेशा इनकम टैक्स ऑफिसर से बहुत डर लगता है। Good evening, friends. Guest of honor, Minissha Lamba ji, my friend Shailen Bhargav ji, and present over here, Sharchand ji, and all the dignitaries who have been invited, and media and the press people. First of all, I would like to say good evening to you all. I'm posted in Delhi as Joint Commissioner Income Tax, 2010 IRS batch. Actually, I met Shailen ji through my cousin, who is class 1 officer at Karnal, and one more my cousin, who is in the politics. But when we were introduced, we met, he asked me that, please, we are launching this magazine and we are programming this. So I said, okay, I will be there to guide you, whatever I can. With respect to the department, I can't say anything, but I am honorary consultant here. Whatever the legal problems do come in the way in such a program, my very old friend, Mr. Ravi Rastogi, is advocate, is practicing since 1985, and we are friends from the merit. We have come over here. All are so enriched, experienced, and they are very expert in their field. The industry, who are always behind the screen and want to come up on the stage and show their talent. And this company especially, which is in the name of Talent Scanner Private Limited. Scanning is a very technical art. Actually, through digitization, something new comes out. This is the technique in which Shailendra is expert and his team is very enriched in this field. I wish all success to the magazine, and I am always here to guide him whenever he requires, because since I have become part of the team, I am always here. Thank you. Thank you so much. Minissha ma'am said that we are scared from the income tax. No. Actually, the people who are not disclosing their true income, or they have some technical problems, they should scare, but not artists. Artists are always welcome, and they show their income very well. I have experienced, lots of experience, because we have completed assessment of the dignitaries. I have completed assessment of Bhuvneshwar Kumar Khiladi, and so many players and film artists from Meerut and Delhi. I had case of Maninder Singh also. But here you have to scan the Yeah. not their income. Yeah, therefore I said that there is no issue of scaring. No, I am as a friend and I am as a part of team. I am always. Bharat Chandra from Sugar सना Mill. जी, my inspiration मेरे बड़े भाई और इंडस्ट्री के दत्त ने, और जितने भी आपने वीडियो देखी है, ये सब शरद जी के किए हुए हैं, तो आपने वीडियो देखा। क्या बात है शरद जी। शरद जी आपसे कुछ चंद। I would like to congratulate Shailen Bhargav for starting Etoiles. Etoiles means stars in French, सितारे. So ये मैगजीन उसके लिए डेडिकेटेड है, उस लड़की या लड़के के लिए डेडिकेटेड है जो छोटे शहरों से आते हैं, जैसे कि जम्मू हुआ, देहरादून हुआ, हुबली हुआ या पौंडीचेरी हुआ, ऐसे छोटे शहरों से जो आते हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। जो सपने देखते हैं बॉलीवुड में आने के लिए, ये मैगजीन उनके लिए डेडिकेटेड है। मेरे हिसाब से ये डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा और फ्री होगा। लेकिन ये पिक्चर्स जो मैगजीन में आते हैं, इनके ग्लॉसीनेस और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होगी कि ऑटोमेटिकली जो देखेगा
वो उस लड़की या लड़के को पसंद कर ले। ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। And we also have a display. This gorgeous, beautiful Minissha ji. So इसे देखते ही मतलब मुझे तो एकदम बहुत अच्छे लग गए. Quality is so good. Printing quality is excellent. अगर आप इसको देखते हैं कोई भी तो, और इसके बारे में जो हमने लिखा है वो उसने आर्टिस्ट ने जो कुछ भी किया है, चाहे उसने अपने स्कूल में कोई अवार्ड जीता है, कॉलेज में जीता है, कुछ मेडल जीता है, एवरीथिंग उसके बारे में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसके बारे में और कुछ उसकी फ्यूचर प्लानिंग्स भी हैं, सो दैट कि अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर इनको देखता है तो उनको कम से कम पर्सनल लेवल पे जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल में उनके वीडियोस भी डाले जाएंगे और प्रमोशन अलग से होगा ही। सो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ यूनिक थिंग। और हम लोग अभी एक कोशिश और भी कर रहे हैं कि इस मैगजीन को किसी एयरलाइंस के साथ टाई अप करके हम करें, क्योंकि जब हम 2-2.5 घंटे 3 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं तो हमको एक ऐसी मैगजीन चाहिए होती है जहाँ पर हाँ जिसमें कंटेंट इतना पढ़ने का ना हो, देखने का भी हो और कुछ इंटरेस्टिंग हो। तो आई थिंक ये 100 पेज की मैगजीन होगी। स्टार्टिंग में 72 पेजेस हैं और इसमें पॉलिटिकल न्यूज़ वगैरह का भी 1-2 कंटेंट है। और ये सब लोग जब पढ़ेंगे इसको तो आई थिंक वो ट्रैवलिंग का कम से कम आधा पार्ट तो हम लोग कवर करेंगे। सो दिस इज द प्लान बेसिकली। और ये टाइटल जो है आज मिनिशा जी के फेस के साथ इनॉग्रेट हो रहा है, एक तरह से एक टाइटल अनाउंस हो रहा है। आई वुड लाइक कि हमेशा हमारे साथ ऐसे ही जुड़ी रहें और हम ऐसे ही हर एडिशन में इनको बुलाते रहें इस तरह से और खूब सारा एंजॉय कर रहे हैं और खूब सेलिब्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू जी। एंड जी और एक दो बातें कुछ और आपसे Obviously, इन लड़कियों की when they see this, when their parents see this, they'll be really proud of these girls. You know, और उसके लिए ये मैगजीन बहुत important है। Along with these pictures, because ads are also very important. मैं आपको और एक एडवाइस करूंगा, इसमें हमारे ऐसे फोटोग्राफर्स जो बडिंग फोटोग्राफर्स हैं उनको भी आप चांस दीजिए। Yeah, because talent can come, but you know the crew like photographers and directors and ad filmmakers, उनका भी सपना होता है. So maybe you come out with alternate editions, with a bit of articles about them, the new talent in that area also. Thank you very much. All the best. किसी और को भी बुला रहा हूँ, शरद जी का होना यहाँ पर जरूरी है। सर 2 मिनट आप यहाँ पाएंगे। And एक मिनट मुझे और अभी जो विजुअल में आपने देखा विनय खोसला जी एंड एज आई टोल्ड यू कि ही इज फ्रॉम जेनेवा। सो जब उनसे वो इतने बड़े प्रमोटर हैं इन चीज़ों के, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मैगजीन को बिल्कुल टॉप पे ले जाना है कैसे भी। तो आई थिंक अगर कोविड टाइम नहीं होता, जैसे उन्होंने बोला कि कोविड टाइम अदरवाइज वो यहाँ होते हमारे, लेकिन उन्होंने कहा लॉन्च में तो कैसे भी करके चाहे कहीं से भी घूम के आना पड़े देन आऊँगा। सो ही इज मेन श्री महेंद्र उपल जी वो बैठे हुए हैं यूएसए से, बहुत स्टेज इवेंट्स के और आशीर्वाद है कि ये मतलब मैं बता नहीं सकता अभी आकर भी। हाँ प्लीज कम महेंद्र उपल जी। एंड ये तकदीर की बात है, किस्मत की बात है, फिल्म की किस्मत की बात है, आपकी किस्मत की बात है। लेकिन थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस इज कीप योर सेल्फ बिलीफ, बिकॉज दैट सी जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है देन एवरीथिंग इज हंकी डोरी। लेकिन जब वक्त होता है जब चीजें ठीक नहीं चल रही है, आपका लो फेज हो रहा है, दैट इज व्हेन यू नीड टू कीप योर सेल्फ बिलीफ थ्रू द डार्क डेज, एंड दैट्स द ओनली थिंग आई कैन एडवाइस। Minissha, Jyoti Venkatesh here. Hi, how are you? It's been so long. Acha, after you made your debut in the film industry, within a very short time the digital era started. So what different do you find from that era and the digital era today? Do you think more people are getting an opportunity to
face the camera? See, the thing is that the digital era actually started much later. Um, by the time the digital era started, if you see magazines, they were moving into the digital space, but people were not accessing it that much. The digital space really blew up when we started getting very high quality smartphones. So that is when on the go people would read the news when you're in the car, when you're traveling, in your lunch break, when you have free time. So as you see, print media was there, but simultaneously they also started maintaining and acquiring a digital platform. But until you did see, and at that time an iPhone was someone only very people who could afford to pay that much would have it. It's only until brands like Oppo and Micromax and all these other brands came in, which priced their phones at a price where everyone can have a smartphone. When Reliance came in and said, you know what, we're going to give free data to everybody. They had data plans that were so cheap. That is when the internet became accessible to everybody. So that's when the boom happened, which I feel was phased, and the boom has happened now in the past 2, 3, I feel, years. All this while it was a transition. Thank you, Minissha. And this question is for editor. What is the print order you have? So he's like Etoiles. So just for learning this, then I think I said, ma'am, तो उन्होंने कहा नहीं ये बहुत अच्छा तरीका है. But anyway, we are working on this thing Etoiles today because वो टंग अलग है वहाँ पर लोग नहीं बोल पाएंगे, तो इसको Etoiles today बोलेंगे. So आप जिसको Etoiles बोलना है, so बोलेंगे. बिकॉज इंडिया में तो कई प्रोनाउंसिएशन यानी स्टेट वाइज भी बदल जाते हैं सारे. सो अभी हम इतना कर सकते हैं कि हम इसको हिंदी में नीचे लिखेंगे सो दैट कि वो सही प्रोनाउंस हो सके. So at least this will be an excuse now for the whole country to learn one new French word. And the print order, how much you are planning to come out? Yes, sir. Every issue, how many copies? But starting this first issue will come to 50,000 only. Then after this increase. It's a very brave effort considering that most of the print publications are actually closing down. They are closing down because, sir, this is a very new concept actually. So we want to distribute this in maximum number of people so that the maximum artists will be approached. And for 2-3 years, okay, we'll invest, and after 3 years we'll earn, no doubt. So Thank you. Thank you so much. We are ready for Media Bites now. And thank you so much, our lovely media and our guest. We are ready now. And myself, Nikasha Chauhan, signing off for the day. Thank you so much. So good to see you after so long, Minissha. Thank you. Tell us your experience. What was your first reaction the moment they asked you to be on board for this? So मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत कम होता है जहाँ पे नए लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है. एंड नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी, हर कोई अपना, जैसे उन्होंने बोला, पोर्टफोलियो खींचता है, अपने पोर्टफोलियो पे इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद टू गेट एक्सपोजर टू द राइट पीपल ताकि आपके पिक्चर्स इंडस्ट्री में सब लोग देखें. पीपल डोंट हैव एक्सेस. अगर आप छोटे शहर से आते हो, अगर आप लेट्स से नवी मुंबई से भी आते हो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू नो कि मैं इन डायरेक्टर से कैसे मिलूँ, इन प्रोड्यूसर के साथ कैसे मिलूँ. आपको फिर कोई एक मैनेजर चाहिए जो आपका काम संभालेगा, लेकिन मैनेजर्स को भी कैसे पता कि वो हर किसी के काम थोड़ी ना संभाल सकते हैं. तो हाउ डू यू गेट द राइट पीपल टू मेक यू मीट द राइट पीपल. एंड दिस मैगज़ीन इज़ वन वे जो बस हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कास्टिंग एजेंट के ऑफिस में पहुंच जाता है. एंड आप कभी ना कभी तो वो मैगज़ीन देखोगे ही क्योंकि आपके ऑफिस में पड़ेगा. सो दिस इज़ अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड अ ग्रेट वे. एंड जैसे मैंने सुना है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि मैं भी ये वंडर कर रही थी व्हेन आई वाज सीइंग द मैगज़ीन कि हाउ आर दे गोइंग टू मोनेटाइज ऑन इट. बट sir is a very smart businessman
So they have figured out exactly how to monetize on this. But of course, this is a long-term prospect. This is a prospect where you will see the fruition of it in a couple of years' time. उससे पहले तो सिर्फ investment ही है, which is a very brave thing to do in any business. आपके जहन में हमेशा मनीषा जी थी कवर के लिए, तो शी इज ऑलरेडी टू कवर सो मेनी टाइम्स, बहुत आपके जहन में हमेशा से? बिल्कुल, हमने बहुत अप्रोच करने की कोशिश की, उनका टाइमिंग और ये सब हमें मैच नहीं कर पा रहा था, तो फिर कल का फंक्शन डिसाइड हुआ, देन अनफॉर्चुनेटली ये न्यूज़ आया तो हमने कल पोस्टपोन किया। फिर हमने रिक्वेस्ट किया क्योंकि उनका दिल्ली में शो था कहीं, तो उन्होंने फिर वहाँ कैंसिल किया कि नहीं वो दिल्ली का देखेंगे बट आप कल का मैनेज करो। देन तो जैसा हमने सोचा था उससे ज़्यादा अच्छा कॉपरेशन मिला हमको एंड शी सपोर्टेड अस। अरे दे दो ना, फायदा क्या हुआ फिर? हाँ जी बोलिए। मैम काफ़ी वक्त से आप इंडस्ट्री में हैं, तो एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म के बारे में कुछ जानना चाहूँगा कि जब से आप आई हैं तो ऐसा मेमोरेबल एक्सपीरियंस बताइए किसी जर्नलिस्ट के साथ जब इंटरव्यू किया होगा आपने, या ऐसा नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस वो बताइए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मुझे नॉट सो मेमोरेबल एक्सपीरियंस इतने ज़्यादा मतलब मुझे हुए ही नहीं है आई थिंक, और मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं बिकॉज आई फील वेरी लकी जर्नलिस्ट्स हैव बीन काइंड टू मी, they have been more kind to me than otherwise. So I have great respect for our entertainment journalists. I've had a great relationship with them over the years. Minissha, you would be the face of this magazine, or how would you be associated? Like, you know, whenever they need you, in what kind of an So whenever they need me, of course, I am here for them. Today was a launch event and they had gotten in touch with me and said, you know, this is the concept of it. Does it work for you? Do you like it? And I said, great, I'm on board. I'll come launch your magazine for you and wish you all the best. Sir, I have a question for you. How did you came up with this thought? मतलब इतना creative और इतना sufficient thought है तो कैसे आया दिमाग में? एक्चुअली मैंने तो अभी पहले ही बताया बिकॉज आई वॉज ऑल्सो एन आर्टिस्ट, सो आई वॉज बेसिकली सिंगर, क्लासिकल सिंगर। तो बहुत से जगहों पर हम जाते थे, हमारे टाइम में तो इतना मतलब 20 साल पहले ऐसा नहीं था, डिजिटल प्लेटफॉर्म तो अब है, तो बहुत देखा कि टैलेंट होने के बाद भी कई बार प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, कुछ अप्रोचेज होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, बहुत साल 15 साल पहले का ये कॉन्सेप्ट है, अभी का नहीं है। So by 15 years I am continuously looking that there is no this kind of platform is not available. Even आप गूगल भी करके देखेंगे बट ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं पे मैगजीन के लिए या नहीं है नए आर्टिस्ट के लिए। अभी तो हम इसके लिए कर रहे हैं, आगे आके फैशन डिज़ाइनिंग में भी जा रहे हैं, इसके आगे जो एडिशंस आएंगे उसमें फैशन डिज़ाइनिंग है एंड ऑल। सो आइडिया आया बेसिकली हमें एक खुद के अपने एक्सपीरियंस से कि जब नहीं मिलता कुछ प्लेटफॉर्म तो जो टीस उठती है वो बहुत बड़े एज आर्टिस्ट, बट हमारे अंदर शायद कहीं एक कलाकार से ज़्यादा एक मैनेजमेंट का पर्सन है, बिजनेस का पर्सन है। देन आई मोल्ड माई सेल्फ इनटू बिजनेस एंड आई रिसर्च्ड इट एंड नाउ दिस इज रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू। सर इस मैगजीन में कितनी कैटेगरीज होगी, जैसे फाइनेंस हो गया, फिर सब हो गया? नहीं, इसमें ऐसा कैटेगरी नहीं, ये प्योरली एक इंट्रो मैगजीन है जिसमें जितने भी न्यू फेसेस हैं जिनको कभी जैसे मिनिशा ने बताया कि इतने सारे लोगों को प्रोड्यूसर को कैसे अप्रोच करें, सेलिब्रिटीज़ के सामने जाना आसान नहीं है, इतनी सिक्योरिटीज़ हैं एंड एवरीथिंग। ठीक है ऑनलाइन हम सर्च कर लेते हैं बट अंदर उनके ऑफिस तक जाना इट्स नॉट पॉसिबल। सो हम लोग एक कंपनी है बेसिकली जो एक तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एनी बॉडी फ्रॉम कॉमन मैन अगर वो भी हमको अप्रोच करेगा सो हमारी टीम जो है कनेक्ट करेगी उसके टैलेंट के साथ एंड कनेक्ट कर देगी डायरेक्ट प्रोड्यूसर एक्टर्स के साथ कि यस आप देखिए अगर इनको कुछ चांस दे सकते। सो ये है प्लेट। सो इट इज़ प्योरली एन इंट्रोडक्शन मैगजीन, इसमें कोई ऐसा आर्टिकल कुछ नहीं होगा, ओनली 3 pages विल बी देयर फॉर दिस न्यूज़ ऑफ फिल्म न्यूज़ एंड सम पॉलिटिकल न्यूज़, ओनली 3 pages आर देयर, अदर ऑल पेजेस आर कनेक्टेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अपकमिंग आर्टिस्ट। you were there in Big Boss, now Kangana का शो भी है लॉकअप करके। I'm asking you, इनका I don't know about the show. कभी ऐसे कि ऑफर आए तो would you be interested? Big Boss में आपने कोई रियलिटी शो में या OTT anything? नहीं 1 second, वो शो होस्ट कर रही है कि वो होस्ट कर रही है, she is hosting the show. अच्छा शी इज नॉट अ कंटेस्टेंट ऑफ द She's शो। not a contestant, she's hosting the show. Okay. Just like maybe like a Big Boss you could say. This is on what platform or channel? It's on Alt Balaji and Alt Balaji पर ही आने वाला है, कंगना रनावत
जी होस्ट कर रही हैं And Balaji ka show. I heard about this show. MX Player, yeah. Okay, but all Balaji is doing it, right? All it is doing. It's called Okay. Lock Up. Okay. तो वो One sec. Excuse me, ma'am. Ma'am, can I just see your tattoo? Yeah, sure. Sure. ओह वाह बताइए मैडम Where did you get this from? It's from my friend. In India only? Yeah. It's a burning rose. Yeah, that I know. Very nicely done. Nice work. Thank you. Yeah. In a not one, it's a good thing because she was there in Big Boss. मतलब हाँ. what a work लेकिन case अगर ऐसा कोई आपको अगर कोई ऑफर आए लॉकअप में जाने के लिए एनीवन रियलिटी शो या because they're leading on- I think if the offer comes and the deal works out in 2-3 checkpoints that it would probably need to work out, and then why not? what are these checkpoints like it is check also Yeah. Check is must actually. वो तो सबके लिए होता है, आपके लिए भी होता है ना? आपके लिए भी होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, when someone approaches you for a new job, आप पहले ये बोलते हो ना, एक चेकलिस्ट है, लेकिन चेकलिस्ट में सबसे पहले चेक भी है. so beside that like what the checkpoint हो गया उसके अलावा what other See, things I you think the do? very first thing to ask is what is the concept. If I will enjoy doing it, if I think that I would be able to compete well doing it, then that is the first criteria. And then after that, of course, is monetaries and what it should always be your time. Your time and monetaries for it should be a match. क्योंकि एक आखिरी सवाल क्योंकि टैटू आपको बहुत पसंद है so जी. हम देखेंगे इन फ्यूचर आपको लाइक ऐसे कुछ डिफरेंट आपका मेरे favorite- पास है, I have 1-2 tattoos, लेकिन वो छोटे हैं. You already have a heart on your hand. Yeah. Because Chotu there sa. Also notice. are lots of openings on the OTT actually Yeah. sure what things are other besides this magazine और क्या हो रहा है what do you like So there is a show of mine releasing which all Balaji has produced. It's going to release on MX and it is called Cold, Messy, Lonely. So it's a relationship about modern love and it's a relationship how love and today in the modern world can be really messy and complicated and this and that. So this just gives a very real take on that. It's funny. I would call it comedy plus drama. So that's called a dramedy. Yeah, I think that's called a dramedy. So it's a dramedy showing different kinds of love and there are many kind of people with different kinds of relationships. It's not one kind of relationship. It's different relationships and how they're different people who So it's going to be a fun, light show. one last question from my side हाँ. हमने लता जी को आज श्रद्धांजलि दी हाँ है, जी. देहांत हो गया तो how would you pay your tribute to her like in case if any memories you have with her yeah how do you remember So unfortunately, I have never met Lata ji, never, and but I have always enjoyed ma'am's music, and आज ही मैं उनके गाने सुन रही थी. आज मैं सुन रही थी, मैं गा रही थी, मैं गुनगुना रही थी, just in remembrance. So that is the biggest tribute you can give is by never forgetting. Because with an artist, you will never forget. Their music is. मैं दिलवाले दुल्हनिया की गाना सुन रही थी. Even today it's so beautiful. लग नहीं रहा था कि इतने साल पहले और मुझे फिर लिरिक्स याद आ गए थे और मैं गा रही थी and then फिर मुझे वो याद आया था कि when I saw the film what I felt. So that will never change with an artist. Lata ji and actors, who've gone in the yesteryears will always be with us. thank you man wish you all the best Thank you. Thank you very much. Thank you all of you. thank you Thank you. Thank you all camera people, all press people. Thank you guys. बहुत अच्छी Please बात है. join for cocktails and dinner. Please join. Cocktails and dinner, nice. चलो हम चलते हैं. या. क्या कॉकटेल डिनर के लिए है ना नहीं.